बैंक रिजर्व बैंक के फैसले को सही मान रहे हैं। उनके मुताबिक महंगाई को देखते हुए रिजर्व बैंक ने सही कदम उठाया है। लेकिन घटती ग्रोथ देखकर इंडस्ट्री परेशान है। इंडस्ट्री चाहती थी कि रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाए ताकि ग्रोथ को सहारा मिल सके। मेरे हिसाब से it was too much of an expectation that was built around the credit policy, and I had always maintained that it is very difficult for RBI to cut interest rates because all this while RBI's focus has been on how to curb inflation, and clearly inflation numbers are not coming down the way one would have hoped to or one would have liked to see. So therefore RBI had to really shift its stance to say forget inflation, let us start looking at growth, and only then one could have realistically expected an interest rate cut, or for that matter a CRR cut. I think the WPI is only around 7% and inflation has come down. Most importantly, inflationary expectations are down because global commodity prices are coming down, especially crude oil. And we are very disappointed that RBI has not lowered the interest rate or the CRR because the lack of funding, especially for small and medium enterprises, and the high interest rates are clearly coming in the way of investment and therefore production and GDP growth. And we have mentioned this. One was expecting that yes, there will be some thing that will happen in the policy to the rates and also to CRR to get more liquidity in the system. And it was disappointing that that didn't happen. All automakers would adjust their production and shut down plants if they have to adjust inventory, because inventory sitting idle is not helping anybody. So I would think that the higher inventory that we have seen in the month of April and May is because of original plans that they had of higher sales, and sales didn't happen. And therefore you would probably see a lesser production in June, and therefore inventory is coming down, is what I would expect. काफी सख्त मार्केट है, ये तो मैंने पहले भी बोला है, और 6-7 महीने तक मेरे को लगता है कि ऐसा ही माहौल बना रहेगा। और बिजनेस सेंटीमेंट पॉजिटिव जब होगा तो हमें उम्मीद है कि विद दी कमिंग दी फेस्टिवल सीजन जो कि 3-4 महीने बाद आएगा, मुझे ऐसा उम्मीद लगती है कि कुछ शायद मार्केट में चेंज आए। ग्रोथ को इस तरह से ओवरलुक किया जा रहा है और हमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी इंटरेस्ट रेट में अभी रिडक्शन होगा, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन आ रही है, जीडीपी ग्रोथ डाउन आ रही है। उसके साथ लिक्विडिटी भी जो बैंकिंग सिस्टम में है वो भी बहुत टाइट है। उस पर इंडस्ट्री का मैं आपको ये पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, इंडस्ट्री पर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। रिजर्व बैंक ने तो महंगाई पर ग्रोथ को कुर्बान कर दिया, लेकिन बाजार आखिर इससे इतनी उम्मीद क्यों लगाए बैठा था? समझते हैं अपनी बैंक के लीडर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, ब्याज दरें नहीं घटने के फैसले से बाजार इतना ज़्यादा हैरान क्यों नजर आया? उसके होश आखिर क्यों उड़ गए? इसकी साफ वजह ये थी कि पॉलिसी के ठीक